हाँ, सो फिलहाल बज रहे हैं सुबह के 5 और यू गाइस मस्ट बी लाइक कितने जल्दी उठ के कर क्या रहा है। नहीं नहीं, कोई मोटिवेशन वाला वीडियो नहीं है। कल इम्प्रॉम्प्टू प्लान बना है कि 4-5 दिन के लिए हम बाहर जा रहे हैं। बाहर मतलब वी आर गोइंग टू आवर नेटिव प्लेस, सो दैट्स द रीज़न आई वोकन अप अर्ली। आई गोना ड्राइव ऑल द वे टू Kankoli, that's where my native is, and we're gonna be there, relax. And I just thought of it as an opportunity to vlog. बहुत टाइम से चैनल पे vlog नहीं डाला और I was like why not, थोड़ा we'll have a change in air as well. So with that said, welcome back to the channel guys, and I hope you all are doing amazingly fine. Let's get rolling. So safety first. So Tara, ready? हाँ Tara, hey Tara, 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 are you ready? So सुबह के घने अंधेरे में यार ये मास्क बहुत वियर्ड लगता है, बट कुछ कर नहीं सकते. सेफ्टी फर्स्ट. सो वी आर नॉट टेकिंग माय कार, वी आर टेकिंग अ सेकेंडरी कार बिकॉज काफ़ी ज़्यादा लगेज है. वी आर टेकिंग द इनोवा टुडे. ये है मेरी टिंगू मम्मी, देखो ग्लास के थ्रू. Hi guys, back on the vlog. So I didn't vlog a lot of time because it was early morning और ज़्यादा मतलब नहीं करना था. And even I wasn't feeling fine because firstly I'm used to driving the car. यहाँ पे if I sit in the passenger seat, I don't know, it was just weird. काफ़ी टाइम से गाड़ी निकाली नहीं थी तो you know the car was kind of, I don't know, the normal smell, the pungent kind of smell was coming in. So I was like no. But here we are now. Stop right now. So just to have breakfast and tea. Mom has got everything because we know that can't eat out, don't want to risk it. So that's about it. The view is very nice here. Like बहुत टाइम बाद बाहर आके इतना अच्छा फील हो रहा है, मतलब बहुत अच्छा फील हो रहा है. And quite happy that I came out. I was actually not gonna make this trip because of work and stuff, but I said यार चल 2-3 दिन की बात है, कर लेते हैं. So अभी हाफ पे आ गए और बोर हो रहा है बहुत ज़्यादा. So I'm just gonna fly the drone now. I just wanted to take a few shots to see how it goes by, and then we'll head back in. So let's go into it. सो है गाइस, जस्ट हाफ वे थ्रू और यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चेक पॉइंट है. सो
we were on our way towards, and only people who have pass are allowed to go in, and the rest of the cars have to do some formality and wait until they clear you. So we do have our medical certificates which we had taken earlier, and I'm just going to give it to Dad. बहुत लंबा लाइन है, कम से कम like at least 15-20 minutes से we are waiting over here, but never mind, I'll just get it done. Be right back. It's a literally never ending line. अभी तक चल रहा हूँ मैं, और ये जा रहा है और आगे जाके वो लोग का चेकिंग है वहाँ पर. So I don't want to take the camera over there. I don't know, it's not a good idea, so I'll just roll it out here. तो फिर वहाँ से तो निकल गए अभी चेक पॉइंट से, बट आगे जाके और एक चेक पॉइंट आएगा, दैट इज़ लाइक फॉर द डिस्ट्रिक्ट दैट वी आर ट्रैवलिंग इन. अभी उसमें इशू क्या है कि हमारे पास मेडिकल सर्टिफिकेट्स तो है, बट दैट आर नॉट सफिशिएंट इनफ, क्योंकि यू नो द रूल्स आर चेंजिंग लिटरली एवरी डे. और अभी रिसेंटली दे हैव मेड सम रूल दैट दे टोल्ड अस कि ई पास के बिना ट्रैवल नहीं करना है. सो अगर आप में से कोई भी कहीं जा रहा है तो प्लीज़ पहले ई पास बनवा लीजिए, बिकॉज उसके बिना ये लोग नहीं जाने दे रहे हैं. दैट इज़ एब्सोल्युटली नेसेसरी थिंग राइट नाउ, क्योंकि लोग कुछ भी बोल के कहीं भी घूम रहे हैं, और भले ही अनलॉक कर रहे हैं लोग धीरे धीरे, बट लाइक आई डोंट अंडरस्टैंड क्या पॉइंट है एग्जैक्टली इस चीज़ का. एक टाइम पे दे लाइक ओके यू कैन गो, एक टाइम पे दे लाइक नहीं ये सब करना ज़रूरी है एंड स्टफ. So you know, just to be on the safer side, just make an e-pass if you are traveling inter-district or interstate, and that's about it. So अभी बस एक ऐसी पिट स्टॉप लिया है और बस निकल रहे हैं. So ये रोड अभी भी काम चालू है इसका. दिस इज़ द मेन बॉम्बे गोवा हाईवे which was initially only a single lane, but अभी recently 2 lane हो गया, and this is soon gonna be a 4 lane highway. So you know, पूरे रास्ते का काम चालू है. We can't go fast, and the car is also not really doing very well. So anyways, I'll just get going and be there. So just another pit stop, just having our lunch over here, and everyone's there chilling, and the view over here. So we stopped here just to see the view, and so यहाँ से वशिष्ठ नदी जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है. So there you go. It's a very nice sight, super pretty. So I finished up my lunch early so that I can take some quick shots from here. So they're rolling in right now. टेरा ने अभी पॉटी किया है. टेरा कैसा लग रहा है? पेट खाली खाली लग रहा है? और मृगांक कैसा लग रहा है गाड़ी में? मज़ा आ रहा है सो के? मृगांक तो पूरा टाइम सो रहा था मेरे साथ. गुड. So guys, this is the second check post where we have come, and even here we have to write down the name of all the family members, the vehicle number, and whenever you cross this district you have to do that. And there you go. So there are 2 check posts. We're gonna sign up a form over there and then get the pass from here. So they have made the process pretty easy for people who are crossing or who are gonna come back pretty soon and who are not residents of this place. Also it has started raining,
so I don't think that I can take my camera out for a long time. One thing I want to tell you is that the road which we came from, I came like I think after a couple of years to my village, and the road, as I told, was a single lane, and they are making it a literally a 4 lane and a 8 lane road in most of the places, which is pretty cool, you know. Like you can easily reach here once the road is done. You can easily reach here within 6 to 7 hours, where it usually takes around 10 hours. Like today we have already crossed around 12 hours of a journey. और पहुंच गए हैं फाइनली. ये गांव का डीमार्ट. ये है मेरे ग्रैंडफादर का नाम. And we are here. So, God. That's our place, and this whole is our land. Again. So I'll just go in. The color is a bit screwed up because rains in Konkan, the rains are crazy. So we actually came here to do the farming, and we'll be doing the farming tomorrow. Something new, and here we are. So I guess, guys, today's vlog is gonna be ending here because I'm sick tired. I don't think that I can vlog anymore. I'm just gonna go have a nice hot shower and then sleep off. So till then, I guess you guys enjoyed the vlog. See you in the next one. Take care, stay safe, and forever stay golden.